किड्स आज की डेट में ज्यादा सॉर्टेड है। नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना, वो इस क्राउड से ज्यादा सॉर्टेड है। ये क्राउड पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस ह्यूज, एवरेजेस ह्यूज, टाइम एंड वर्क ह्यूज, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ह्यूज, you have HCF LCM huge, divisibility huge, triangles huge, polygons huge, coordinate geometry huge, trigonometric huge. अगर आपको स्कोर करना है, every single guy who has scored in the examination has done this. Hello students, this is Ashish Kumar. I welcome all of you to Textbook MBA channel, guys, for your CAT and OMETS preparation. We are a channel dedicated for MBA aspirants, and we give quality content not only in the form of academic content but a strategic content also for MBA aspirants. Okay, and ये जो session है, in this session we will talk about how to prepare quant for CAT 2025. But before we proceed any further, let me give a brief introduction of myself, my journey. I'm standing in front of you on Textbook MBA YouTube channel, guys. My name is Ashish once again. I've got close to, I've been teaching since 2013. Okay. So I've got close to 12 years of teaching experience. And I started teaching for CAT fraternity in 2015. 2015 से I started teaching for CAT. Offline में I used to teach initially. I'm based out of Pune. So I taught in time Pune for, let me say, 4.5 to 5 years. And I started teaching at a very tender age. Okay. I'm not that old, I'm not that young. But in 2015, 10 years ago, you can say कि students और मेरा age एक ही था when I started teaching for CAT. Yes, so today I'll share experience, all of my experience, and not my experience जिसमें मेरा role नहीं है, मतलब not, I'll not be talking about me, I'll be talking about my experience about the students, and whatever I will be delivering today, वो मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ ही है, होते होते इम्प्रूव होते होते जो एक फाइनल आया है, that I'll be sharing. ठीक है, and I want to talk to mature students. I don't want to talk to kids यार. मैं उनसे नहीं बात करना चाहता हूँ who's actually very confused. Okay. अच्छा, let's start with this. If you want to reach me out for any of the things, you can join this Telegram channel. Search करो Telegram पे. This is my Telegram channel. You can reach me out. यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी मिल जाता है. लगभग QA का सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए. All the classes, everything. Okay, तो ये ज्वाइन कर लेना. So I don't want to talk to those guys who are actually confused. Yes. In fact, आज की डेट में ना, this exam targets the audience who either is in the final year of their graduation or are working professionals. Okay. So you guys should be behaving mature. Kids आज की डेट में ज्यादा सॉर्टेड है। नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना, वो इस क्राउड से ज्यादा सॉर्टेड है। ये क्राउड पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों रहता है। I don't know what they're expecting, what they want from the system now. Guys, there is no perfect time to start. ठीक है, और यहाँ वहां घूमने का मतलब नहीं है। You should start. हाँ, स्टार्ट होने के लिए you need some guidance. Watch 1 or 2 videos. This one video is sufficient. आपके कैट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए this one video is sufficient. Okay. If you want, एक और देख लो किसी का, ठीक है। बट हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एज ग्रुप, हम लोग 4-5 महीने बस ब्लॉग ही देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी ही देख रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे 8 महीने में प्रिपेयर करो, कैसे 6 महीने में प्रिपेयर करो, कैसे 4 महीने में प्रिपेयर करो, कैसे 30 डेज में प्रिपेयर करो। हम बस ये कर रहे हैं। सो आई वांट टू टॉक टू द मैच्योर गाइस, आई डोंट वांट टू टॉक टू द किड्स, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी देखो बेटा, ये जर्नी तुमने खुद सेलेक्ट करी है। यू आर टारगेटिंग एमबीए, नोबडी हैज फोर्स्ड यू टू डू द एमबीए, इट्स योर ड्रीम। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, nobody else would be doing that for you. You have to protect your dream. तो देखो, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या चैलेंजेस है, क्या पैटर्न है,
सब देखेंगे. I'll try to keep this video short. I have been given a timeline कि इसके अंदर finish करो sir. But I want to talk. ठीक है, I want to talk. up to x स्पीड पे करके देख लो. I want to talk. Let me show you some experiment. हमारे बच्चे एक छोटा सा experiment देखो. Try to figure out this. This is first image, second, third. This is how this experiment is progressing. So there is this guy who is pushing a big block of ice, okay, in Mexico City. ये Mexico City में experiment किया गया था 20-30 years back. He kept doing that in front of everybody. Kept doing that जब तक वो block छोटा नहीं हो गया और ultimately वो disappear नहीं हो गया. This is the current scenario of aspirants. The name of this guy is Francis Ellis. I like this guy a lot. The name of this guy is Francis Ellis. He is a Belgian, Mexican, half Belgian, half Mexican. The city that you saw was Mexico City. He did that experiment, and the conclusion was sometimes working on something leads to nothing. हमारे बच्चे ना एक ही काम कर रहे बार बार जो रेलेवेंट नहीं है, एक ही गलती कर रहे बार बार, और स्टार्ट नहीं कर रहे, स्टार्ट भी कर रहे तो एक ही चीज देख रहे, ठीक है, और जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं जा रहे, ठीक है, वो ब्लॉग देख रहे वो रील देख रहे एमबीए के लिए. यू नीड टू स्टार्ट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन बेटा. You need to start structured preparation. You have to get sorted as fast as possible. It will take 1 day. It takes only 1 day to get sorted, not more than 1 day. लेकिन 6 महीने तक. Sir, in fact, our guys are so confused कि 9th और 10th के बच्चे क्वेश्चन देख के सॉल्व कर देते हैं, बट उसी 9th-10th को पास करके हम जो बैठे हैं आज, हम उस क्वेश्चन को देख के बोलते हैं आई हैव डाउट इन दिस, हाउ टू फाइंड एक्स, हाउ टू फाइंड वाई. यू आर इन 8th and 9th, राइट? अभी 8th and 9th के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन. तुम भी थे, तुम भी करते थे. आज क्या हो गया? आज क्या हो गया बेटा? इवन चलो आप भूल गए, अग्रीड. हम सर हम लोग ना गैप हो गया है, इट्स अ 4-5 years 6 years गैप, ठीक है, but it is not that difficult. You start doing it na. You start doing it, you'll start recalling things. You'll start recalling things. There is no alternate, there is no shortcut. अगर कोई बोलता है there is shortcut, there is no shortcut. Let's move ahead. About the preparation, you need to understand the pattern first. You need to understand the pattern. The best thing is you yourself watch previous year papers. जाकर देखो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए. Go and watch it. The best way is doing it on your own. That is the best way. ठीक है, I'm giving you a gist of it. I'm just giving you a gist of it. These are the marks scored, marks required for certain percentiles for year 2024, 23, 22, 21. Okay. Quant में there are 22 questions. So these marks are out of 66. These marks are out of 66. Okay. So 2023 का paper was little bit tough for quant. थोड़ा सा difficult side पे था. So, and 2024 में the paper was pretty easy. Most of the questions were doable. So you can see jump in marks. You can see jump in marks. Pause the video and then observe these numbers. Video को यहाँ pause करो and get a feel of these numbers. Okay, sir, for 100 percentile, I needed to score 49 marks in 2023. And I need to score 59 marks in 2024. What is 59 marks? 20 questions out of 22 questions. Okay. 99.9 percentile के लिए 45 marks. 99 percentile के लिए 33 marks. So the competition is over on the top.
99 परसेंटाइल आप 33 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, 11 क्वेश्चंस। लेकिन उसके ऊपर परसेंटाइल बढ़ाना है तो मार्क्स में हेवी जंप है। देखो, गेट अ फील ऑफ दिस टेबल, डू दैट, ग्रेट। एंड अब सर ऐसी बात है अगर, तो हम किसको फॉलो करें? 2023 को फॉलो करें, 2024 को फॉलो करें? यू सेड कि 2023 में इजी पेपर आया था, 2024 में डिफिकल्ट आया था। व्हाट वी शुड फॉलो फॉर like our preparation? Let's go with the basics. Let's consider 2024 का pattern और 2023 का. Do it the orthodox way. I would say do it the orthodox way. Don't leave any stone unturned. आप डिफिकल्ट पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करो। यू हैव टाइम ना, यू हैव टाइम। you'll be watching this video, I am recording this video in the month of March. This is 19th or 20th of March 2025. You have your examination is on the last Sunday of November. You have time, okay? Do full-fledged preparation. Understand the pattern. If we talk about the bifurcation of the questions topic wise, here check this out. And I have taken the reference of slot 1 for all the years. I've started from 2020 till 2024. ठीक है? I've taken the reference of slot 1 for all the years. slot 2, slot 3, जैसे 2024 में slot 2, slot 3 slot में एग्जाम हुए थे, slot 2, slot 3 का identical था. This is just to give you an idea. Again, pause the video and go through this table. Feel this table. You'll come to know कि arithmetic and algebra, they play dominant role. Out of 22 questions, you can see up to 9 and 8 questions in arithmetic and algebra. Okay, don't go towards the sum. Sir, ये 23 है, यहाँ पे 24 का sum है. I've seen that. But मैंने slot 1 का example लिया है, but I've considered all the 3 slots. So किसी में नंबर सिस्टम के 2 भी क्वेश्चन थे, किसी में ज्योमेट्री का 3 था, ये 2 था, तो किसी में ये 8 था, तो ये 9 था. A question here and there, that's it. The major thing to focus is कि arithmetic will play a very important role, algebra very important role, equally important. And we as a student, we invest 6 to 7 months only in arithmetic. Because we are confused. Arithmetic is an easy section. You should start with arithmetic, obviously. Being a little bit aware of arithmetic concepts. Arithmetic may you have concepts like what? Percentages, ratio, proportion, averages, alligation, time and work, time student distance, simple and compound interest. We have done these topics in our 10th standard, 9th standard. So you should start ideally with arithmetic. But it should be completed in a month or 1.5 months. And you should jump to algebra. But students keep on doing arithmetic till 6 months. Because on all the platforms, on the free platforms, faculties keep on teaching arithmetic, and you guys keep on doing arithmetic. Structured preparation is required. You need to know how many questions to solve from a particular topic. You need to when to switch to a next section, next module. Geometry, 4 questions, roughly 4-3 questions out of 22 questions. Only 4, but the syllabus is very less, na? Geometry is a small module. So this is a good weightage for geometry. And then number system and modern mathematics. We haven't seen questions from modern mathematics since last 2 years. That doesn't mean the question will not feature. There is 0 chances of question to be featured in next year. There are chances, but again, for the time being, you can keep modern mathematics in the last. Since from last 2 years, no questions have been asked. Prior to that also, hardly 1 or 2 questions have been asked. You can keep it for the last. So yes, this is the table. This is the breakup. ये breakup है module wise. Keep this in mind. ठीक है? In fact, you should save this video
ओके एंड ये टेबल बार बार चेक करते रहो, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Now if you talk about difficulty level of this examination for QA section, so I'll take 2024 as the reference. I'll take 2024 as the reference. 2024 में ना there were 8 to 10 easy questions, very much doable. Okay, hence the cutoff shoot up. There was a steep rise in the cutoff because majority of the paper was easy. There were 5 to 7 questions which were medium level and hardly 5 to 7 questions which were difficult. Okay. So sir, इसके हिसाब से प्रिपेयर करें? No, prepare with the orthodox, prepare in a orthodox manner. सर अब तो क्वेश्चन पेपर इजी आ रहा है, मेरे पास अरुण शर्मा का बुक है, एलओडी 1 एलओडी 2 करके जाए क्या? एलओडी 1 एलओडी 2 तो करके जाना ही, एलओडी 3 भी करना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइंट हो, वेल एंड गुड, just follow their structure. If not, if you are doing it on your own, follow LOD 3 as well for Arun Sharma or Sarvesh K. Verma, whatever it is. Do the complete preparation. Okay. Okay. Let's talk a little about. We did talk about these two pointers. Let's talk about the syllabus. Syllabus is actually huge. Syllabus is actually huge, and you should start preparing, and you should prepare in phases. Phases. अब हम लोग phase की बात करेंगे, पहले syllabus देख लेते हैं. Syllabus is actually huge. Now in front of you we have the syllabus for different modules. Number system, arithmetic, algebra, and then there is module 4 which is geometry, and then there is modern mathematics. You see each of these modules have like 7, 8, 9 up to 10 topics, subtopics. And these topics in their own are also huge. Profit and loss, huge. Averages, huge. Time and work, huge. Time and distance, huge. You have HCF LCM, huge. Divisibility, huge. Triangles, huge. Polygons, huge. Coordinate geometry, huge. Trigonometric, huge. So it will take time. The entire algebra, linear, quadratic, series, log, functions, graph, huge. Again, pause this video, go through the syllabus once, or go through the syllabus by you must be having any standard reference book. Check the syllabus once. It should be in your mind. सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए. And we are talking about 40-50 subtopics. We are talking about 40-50 subtopics. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 8 17 3 3 6 10 18 26 34 35. We are talking about close to 40 topics to be covered. This should be phase 1. आपको क्या करना है, हर टॉपिक का क्वेश्चन LOD1 LOD2 सॉल्व करना है फ्रॉम एनी बुक. ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन टेक योर केयर. कोचिंग को ज्वाइन करने से क्या होता है ना, दोज गाइज आर अवेयर कि एग्जाम में क्या आने वाला है. सो उसके हिसाब से वो सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारा रेलेवेंट कोर्स बनाते हैं. और सेल्फ स्टडी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें रेलेवेंस नहीं समझता कि ये रेलेवेंट है या नहीं है. इज दिस एक्चुअली वर्थ इट? सो यू एंड अप वेस्टिंग सम टाइम. You need a lot of expertise to understand कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, इतना करना है, रुक जाओ, move to next topic. And coaching also helps you to keep track of your preparation. But still, if you are doing on your own, self में, तो get a standard book. Do not wander too much here and there. Follow 1 or 2 YouTube channels, good ones. ठीक है, we are one of them. You can follow us. We do provide all the syllabus. We will cover all the syllabus that is required for CAT. With a little bit of practice on your own and by attempting some mocks, you are good to go for CAT. Okay. So phase 1 mein you need to discuss you need to work on all of these. Okay. Side by side,
ट्राई टू मेक फॉर्मूले बुक ऑन योर ओन। हर टॉपिक का फॉर्मूला बुक खुद बनाओ, हैंड रिटन। दिस फेज शुड टेक आइडियली 2 months, नॉट मोर देन 2 months। दिस शुड टेक हार्डली 2 months। इससे ज्यादा लग रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग यू आर डूइंग। दिस एंटायर थिंग शुड टेक 2 months। इससे ज्यादा लग रहा है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। रीचेक, इंट्रोस्पेक्ट करो। ओके, फेज 2 में, वंस यू आर डन विद फेज 1, फेज 2 में you should be solving previous year questions from 2017 to 2024 which is officially published। so बहुत सारे sources पे आपको ये मिल जाएंगे। attempt every single question from 2017 to 2024 immediately after phase 1। also in this phase you should be attempting questions of LOD 2 and 3। जो भी बुक है आपके पास उसका LOD 2 and 3 आपको अटेम्प्ट करना है। This phase should take another 2 months। This phase should take another 2 months, hardly 4 months। And अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, you need to think about it। उससे बढ़िया आप प्रिपरेशन छोड़ दो। Okay, because time is the most precious thing you are having। and अगर आप 4-5 महीने बाद भी lost हैं, if you are not able to do this, look for something else। और आप जहां भी काम कर रहे हो, work on that, try to focus on that and उस पर प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है। and once you are done with phase 2, phase 3 में mocks, you need to attempt mocks, lots and lots of mocks, lots and lots of mocks। without mocks the examination, one thing without which you cannot attend the examination is this। yes, अगर आपको स्कोर करना है, every single guy who has scored in the examination has done this। what? he has attempted lots and lots of mocks। बाय करो फुल लेंथ मॉक्स कहीं से भी, अटेम्प्ट करो सेक्शनल मॉक्स, अटेम्प्ट करो चैप्टर वाइज मॉक्स। ये नहीं मिलेगा फ्री में, ये नहीं मिलेगा फ्री में। बाय करो, 2-3-4 इंस्टीट्यूट का बाय करो। ओके, एंड अटेम्प्ट करो मॉक्स, डू द प्रॉपर एनालिसिस। यू नीड टू डू दैट। ओके, यू आर अ बिग बॉय, आपको करना है। This is the only way, there is no shortcut। it will take another 2 months। the entire preparation will take 6 to 6.5 months if you are an average student। बहुत smart है, you are aware of everything, याद है सब कुछ। there are boys जिनको याद है चीजें, still you will take 4.5 to 5 months, not less than that। 2 महीने 3 महीने में प्रिपरेशन नहीं होगा। when I say नहीं होगा means top वाला प्रिपरेशन क्रैक तो कर लोगे, बट 99 प्लस 99.5 99.7 के लिए 2-3 महीने इज एब्सोल्युटली नॉट सफिशिएंट। हो गया मतलब तुक्का था, मार्क्स आ गया मतलब आपका प्रिपरेशन का कोई रोल नहीं था, यू ऑलरेडी वर स्मार्ट। ओके, सो गाइस दिस वाज इट। and if you want free classes, I conduct free classes, सारा का सारा डिटेल आपको चैनल पे मिलता रहेगा। डू ज्वाइन द चैनल, लुक फॉर आशीष _textbook MBA on Telegram। you'll reach to my channel, join that channel। I keep on posting the links of the free classes on the app, on the Telegram channel। okay, abhi we are running a scratch batch for CAT 2025 for all the 3 sections। channel पे आपको दिख जाएगा, follow that। we are giving relevant content for quant, we are giving relevant content for VARC, we are giving relevant content for DILR, completely free of cost on channel। हाँ, still if you want to join some batch, so we are offering this batch as well। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एक बैच की जरूरत है, सख्त जरूरत है, then we have this target IM batch। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक ऐसा बैच है जिसमें जो भी चीज चाहिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत केयरफुली क्यूरेट करके हमने डाली हुई है। We have put 170 plus live classes, practice questions, mocks, previous year papers, notes, ebooks, mentorship, what and what not। Everything that you need, ये तो बहुत कम फीचर लिखा है, everything that you need is in this batch। This batch is scheduled to start in the last week of March।
Guys, do join as fast as possible. If you want a structured preparation, we'll be finishing it 2 months before the examination, 2-3 months before the examination. Okay, इसमें आपको structured preparation, आपके preparation का track होता रहेगा. Do that, guys. Okay, if you have any confusion, एक inquiry form है description में, भर दो. Our team will reach you out and will clarify your doubts. Sir, I want the batches for OMITS as well. I'm not only targeting CAT, but I'm completely into MBA. I'll be targeting major OMITS as well, other management entrance tests. You should go with MBA Pro. MBA Plus target time batch is subscription to one batch, but अगर आप MBA Pro लेते हो, you'll get full access to all the batches that we will be launching for CAT 2025 और OMITS 2025. इसमें अगर CAT के हम 3 बैचेस लॉन्च करेंगे तो सबका एक्सेस मिलेगा. ZAT, NMAT, CMAT, MHCT सबके बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा. And on top of that, we are offering CAT Assure program also. This is a value addition to MBA Pro students. You will work hard, we believe. अगर आपको ब्लैकी से कॉल आ गया, we will refund 100% of the course fee. अगर आपको ब्लैकी से कॉल नहीं आया, बट अगले टॉप 20 स्कूल से कॉल आया, even if you are not selected, just call आया, we will refund 75% of the course fee. The list of the top B schools eligible for this is mentioned here. Pause करके you can check the list. So how good it is. Prepare भी करो, crack भी करो, पैसे भी वापस लो. Okay? चलो guys. This is done from this session. I wanted to talk a lot और भी बहुत ज़्यादा, but time का limitation है. We will talk on the channel. ठीक है? I am very easily reachable. I respond to all of you. ठीक है? We will talk on channel and do show up on YouTube classes which are completely free of cost. Scratch batch till you join any structured paid batch. आप इस YouTube पे आओ, attend करो exam, attend करो sessions and get benefited from it. चलो बेटा, and behave like a mature boy. ठीक है? Which you are actually. Okay? चलो guys, have a great day ahead. This is Ashish Kumar signing off from this session. We'll meet again in next session in some informative session. Till then, have a great day ahead, guys.